Hello, students. Hello, Lavanya. Very warm welcome to you for another important class on amines. What we have told you about the amines last time, we discussed the basicity of amines. What I discussed with you last time, tell me. Basicity of image. Basicity of the amines. And the basicity of the amine is due to basicity of the amines are due to students. What is the reason of the basicity of the amines? If I write amine, student, you are writing like this. There is a lone pair of electron which is responsible for the basicity of the amines. ठीक है? Lone pair. So the basicity is decided by the availability of this lone pair of electron. ठीक है? The more it is available, the more basic it is. And we have given you very important question, students. Very important question. One of the two is always asked in the paper, students, where we discussed with you CH3. We said CH3 3N. Then we said CH3 twice NH. Then we said CH3 NH2. Then we said ammonia. Okay? When we discussed basically the basicity of these amine, students, we have asked you what is the order of basicity. The order of 2 degree, 3 degree, 1 degree, and you cannot answer till I tell you gas phase or aqueous phase. This is what I told you, student. Very important point. If I say in gas phase, students, then there is no solvation. There is no formation of hydrogen bonding, which takes place in the aqueous solution. In the gas phase, simply you have 3 degree, more basic than 2 degree, more basic than 1 degree, and then ammonia. This was the order which we followed. Right or wrong? Tell me. Yes, sir. In the gas phase, when I say this is important, student, when the question will be given, are they mentioning the liquid or the gas phase? This we have to see. If order of basic in case of substitution in aqueous solution he says, then it is a different story. We have told you the reasons for that, students. If aqueous is not given, students, if aqueous is not given, then we have to be sure what is going to be the basicity of these amine, students. And you will see that when in the gas phase, the only effect which is operating, which effect is operating in the gas phase, jaldi fast, 30 seconds. 30 seconds for you. Inductive effect. Inductive effect is the correct answer. Inductive effect plus I effect, we told you. So the plus I effect will increase with if you have N CH3, CH3, students, CH3. There are how many? Plus 3I. There are 3 groups which are electron donating, students. So the electron density will increase more here. So what is happening, student? Here you are having plus I effects of 3 R groups. There are 3 R groups. 1, 2, 3. So the plus I effect is there for how many? 3. There are 3 CH3 groups. And for 2 degree, there will be 2, 1 degree, and then ammonia. So in gas phase, students, the effect is inductive effect. So there is no problem in deciding the basicity when we do not say aqueous phase. But when we will mention, student, when we will say the basicity in aqueous phase, student, aqueous phase or aqueous solution, then it is clear, students, we are talking of water. And in this case, the factors, what are the factors which decide the basic? Inductive effect, solvation, hydrogen bonding, and acidification. Very good, correct answer. This question was asked in the paper. I do repetition of questions which are important for you. They will be asked in the question paper, student. Inductive effects are there. These are also
The resonance effect, these are the electronic factors, student. These are called the electronic factors. And there are other factors which you are saying solvation and formation of the hydrogen bonding, students. So the more the hydrogens, the more is the hydrogen bonding and more is the stabilization of the cation. So stabilization of the cation, student, stabilization of the cation which is formed by the solvation process. So the two things were reverse orders. This was increasing, this was decreasing the basicity. You seen that. So that result was the sum of these factors. So it becomes complicated for the higher amines. However, we told you we must remember the order for two at least cases which are given in the book. The two cases which are given in the book must be remembered, students. And in aqueous solution, the very favorite question which is given in your exam also are these two. These two cases are given in the book, so we must learn them because there are not one factor, there are more than Sir, your voice two is factors. breaking. Any problem with the voice? It will be okay. Some Yes, sir, it's breaking in between. okay, the network issue could be there, students, it will be okay. Or still the board is visible, you can keep on seeing the board, don't worry, you will get a recorded video also. So what we are saying, students, the order of basic strength in case of substituted amines, methyl and ethylamine, must be known to us. These are the two cases which are very important for exam. This is case 1 and this is question 2. In the first case, you have ethyl groups. Ethyl group order should be known to you, student. This is the order in aqueous for ethyl group. You can see that 2 degree. How I remember 2 degree, more than 3 degree, then 1 3 degree, degree, 1 degree. then ammonia. In aqueous, I am saying this is important point. So when we are discussing the aqueous solution, the reasons you have already given, the solvation effect is there, inductive effect is there, hydrogen bonding is there. All these factors together decide for these. And for methylamines, we told you very clearly this order we should learn. 2 degrees always, but here 1 degree, then 3 degree, then ammonia. So the only difference is, student, between the two. If I remember this methylamines, students, 2 1 3 2 1 3, then just reverse this order. 2 will always remain the first highest preference. As you can see, most basic is 2 degree. Then 3 1 for 1 3 for 1 3 for methyl, and for ethyl you will change it. This you will change for ethyl. This is the order for methylamines, student. This is the order, and for ethyl you will just change it. You will change this only for ethyl. So I hope you understood. This point is very important. Very important questions are asked in the paper in this. And if you compare, student, question was that if I compared aniline with CH3, CH2, NH2, which is more basic, students, which is more basic. This is ethanamine. Ethanamine is more basic. Ethanamine is more basic than aniline. The reason you have told, this has a much lower pKb than this. The pKb values were also given. The reason is because this lone pair of electron is withdrawn, as we have shown here, by the benzene ring. Therefore, whereas this is more available, plus I effect is operating, and this is plus R effect. So this is aniline is a weaker base than methanamine is a standard and a good question for the paper, student. Then we told you that those groups which are electron withdrawing will decrease the basicity, and electron releasing group will increase the basicity of this aniline. Important question for the paper was discussed, student, discussed.
Such questions are important and will be asked in the paper. This is a very important point, students. And if I have to compare the basicity of CH3, CH2, NH2 and CH3, C double bond ONH2. This is my ethanoamine students, and this is what ethanoamide, which is more basic important question, student. So we are discussing question 2, question 3, question 1. Every time we are discussing question and answers in our lectures, because to understand what we have learned, the question answer must be given by us. If we can give answers of the questions, we have understood the topic. Otherwise, we still need something more. Now the question 3 is on the screen. You have 1 minute to answer the question, student. Which is the 2 is more basic? Ethanamine or ethanamide? What factors are operating here, students? What factors are operating here, students? We are trying to tell you certain important points. Important points here. What factor is operating, students? Here, very important factor. Which is more basic, this or this, student? What will happen here? There is a lone pair of electron. This is giving. Ethanamide is more basic. Why? Here, what will happen? This will be removed by this oxygen. Now, which is more basic? Which is more basic? This lone pair of electron, what is happening? There, you can see the oxygen is highly electronegative. There is a double bond. Then there can be resonance. There can be resonance, students. And you can see the result is this this nitrogen. What happens? This lone pair of electron can be withdrawn, student, withdrawn by this. So the result of this is, you can see the result. What is happening now? This nitrogen, if the electron pair goes like this, what will happen? This will become positively charged. This nitrogen will become positively charged. See that thing, what is happening here? Therefore, this is more basic, more basic. Ethanamine is more basic than amide, student, as you can see what is happening. CH3, C double bond O, NH. There is a lone pair of electron. If it goes, student, like this, then what happens? CH3, C, O minus. This is becoming a double bond, and NH, and this is becoming a plus now. Plus, where is the lone pair of electron is now delocalized. It is not available here, as you can see. And as you can see, nitrogen is now having, the nitrogen here was sp3 hybridized, it becomes sp2 hybridized here. So more s character means the less availability of electron pair. You can see that when we answer the question, we have to be very careful. That is why I have given you some examples of the basicity of the amine, student. Certain questions are asked repeatedly in the exams. So we have to be careful. How do we answer the question? Now you are given another question. We are writing question 4, student. And this is our pyridine. So here you are given two compounds, student, which is more basic. You know what is the name of this? This is pyridine. And this is piperidine. Both have nitrogen and lone pair of electrons. Now where the electron pair is more readily available out of the two? Out of the two, students. You can see that this nitrogen here has a double bond. Nitrogen here is sp2 hybridized. And nitrogen, this is not, these are hydrogen, these are hydrogen. This nitrogen is sp3 hybridized, students.
What is the result of this? This is sp3 hybridized nitrogen. This hydrogen is sp2 hybridized. So where will sp2 hybridization mean more s character? That will mean that it will the electron pair is will be attracted more. Is less available here. Is less available, and electron pair is more readily available here because this nitrogen is sp3 hybridized. So when the more s character means it has a more tendency to attract the electron towards itself, students. So this is more basic than this. Piperidine is more basic than pyridine. Clear? Yes, sir. And the pKa value, the pKa values, if we see student, it is 8 point pKa value. If I see the P is 8.75 for this. pK value of pyridine. This is a pK value of pyridine, student. Pyridine 8.75, and the pK value of piperidine is about 2.88. 2.88. So which is more basic? Piperidine is more basic than pyridine. These are some of the questions, students, which were asked in certain papers, which I am trying to bring to your knowledge. Certain questions can be asked, students. We have to be careful in answering the question. You have noted down. I will give one or two more tips for this, then I will proceed further. You have noted all this? Have you noted or noting down? Yeah. Question, Yes, sir. Noted. question, answer, question, answer. In the paper, what type of questions can be given? Basicity of amine is a favorite question for the examiner. There is no paper without a question on that. Gas phase or aqueous phase, you have seen, very, very important. This question, very important, which I wrote here. 10 times it has appeared in the paper. Methylamine and ethylamines. Okay? Aniline and ethanamine, and amide is less basic than amines because the lone pair of electron is less available. Students, less available. Comparison has to be done. Electronic factors and other factors. If aqueous is given, then I will consider those factors also. So here, students, we have been talking of some very interesting and important questions, and how much we understand. You are quite intelligent students. You have just to practice and work out. These question answer are very useful for us. All right, students, we can think of. Sir, Uh-huh. Yes. Tell me, what is the question? you said amides are Less basic than amines. lesser basic than. Amines. Yes. You, the reason I gave you, you have understood the reason, na? Yes, sir. Yes, sir. This is my amide, na? Yes, sir. Yes. Again, I am showing it. You can see it. And this is my amine. Now, this lone pair of electron, what happens? See the resonance? This is being withdrawn, but here, this is donating. So, what happens? This is less basic. Okay? Clear? Yes, sir. Hanji, sir. Yes. Amides are less basic. These are amines. You have seen that. Okay, very good. You understood this point. All right. So, students, wherever the lone pair availability is more, that will be more basic. That will be more basic. For example, another question. So many questions we are talking. Question number 6. We give you NHT, students. This is my aniline. I give you NH2, and then I give you N. This is a heterocyclic compound. Heterocyclic compound. This is called pyrrole. What is the name of this? Pyrrole. This is aniline.
ठीक है, and this is a cyclohexanamine, cyclohexanamine, this is cyclohexanamine, ठीक है. Out of these three, if we have to arrange them in the order of increasing basicity, which is more basic, students here. See the here you see the electron pair is withdrawn by resonance. Here, what happens? Yes. The electron pair is available. There is no ring to withdraw these electron pairs. But here, what happens? This lone pair of electron is involved in the aromaticity of the pyrrole. This is also not available, student. What happens? This is also an aromatic compound. 4n plus 2 rule. How many? 2 plus 2 and 2, 6 electrons. This also what happens here, in pyrrole. This is an aromatic compound, students. You know about it. You have seen what happens to this lone pair of electrons, student. Something like this, a resonance. The result of that will be, what will be the result of that, students? This is gone here, and what happens? Then this negative, this positive. See, this type of aromaticity is there. Here the nitrogen is involved in the aromaticity. This is an aromatic compound. So the nitrogen lone pair is involved in aromaticity in the case of the pyrrole. So what will happen? What will happen? What will be the order of these students here? So the number one, which is the most basic here? Most basic will be the second one. Second one. Correct answer. If this is my 1, this is my 2, this is my 3. Then the second one is most basic. Then what happens after that? After that, aniline, and this will be the least 3, because that is involved in this is involved, students, in the aromaticity. So students, the order written by you is now, this is more basic than aniline, and that you can see what is happening, pyrrole. This is the order. ठीक है? Yes, sir. Everything clear? ठीक है? You see that how much variety of questions can be there in the students' papers. Whenever we are writing, certain questions can be of different nature. Students, we have to be careful in answering these questions. And further, there is a ortho effect which operates, student. If I have to compare aniline and NH2 CH3, student, this methyl group is at the ortho position. Methyl group is at the ortho position, students. What happens? This is aniline, NH2. Okay? If I have, then what happens is this becomes more basic. Then this is called an ortho effect. This is a special case. Although this is an electron donating group, but here what happens is, if it gains proton, students, then this bulky group is present at the ortho position, and this will call steric repulsion. What happens if it gains a proton? It will become NH3 like this, and this is my CH3, student. What happens? This is no longer a planar molecule, student, and the result of this is there is a strong repulsion between these two groups. CH3, this is a steric repulsion. So this is called an ortho effect. But if I have NH2 at para position, then what happens? This is more basic than aniline, because this is an electron releasing group.
There is no steric hindrance now. It is farther away. This is at para position. See the questions, how variety of questions which we have given you. So we can compare the basicity of different compound students. If we can also compare the basicity orders. Okay, all this you have got the idea what we are doing. How the basicity will be decided by the availability of the lone pair of the Yes, sir. electrons. Basicity will be decided by the how much lone pair is available by electronic factors, or in the water there could be some other factors which are aqueous factors. Aqueous factors could be there, students. So all this we have to be careful. For example, you are given aniline, then you are given NH2 CH3, then you are given NH2 NO2. So what is the order of basicity here, student? What is the order of basicity here? How will we decide the order of basicity in this case? This is electron donating. So this will be the number 1. This is electron withdrawing, nitro group, least. Yes, sir. And then this is at number 2. Yes. Okay? 1, 2, 3. This is the least basic here, because nitro group is electron withdrawing, strongly electron withdrawing group. So what is happening, student? That electron withdrawing group is here. Here also electron withdrawal is taking place, but this is also giving, electron is being given, students. So comparison is done in many ways for the compounds which we are talking. And if we have one more case, student, for example, if I give you another question, this is my NH2 aniline, then I say CH2 NH2, and then I write C double bond O NH2. If I compare the basicity of these students, what will happen? Out of these, which is most basic? 3 compounds, 1, 2, and 3. Which will be the most basic here? Arrange in basic supposing increasing order. Which will be the most Second basic? one will be the most basic. Yes, correct answer. This is the most Second basic. one. And then after that? The first one. Yes, the order here is 2 is more than 1 is more than 3. Amines will be the least basic, because here the, you know what effect is operating. Oxygen is highly electronegative. It can accept the negative charge. Here also going, but that charge is going on carbon. Here the charge is going on oxygen. Electron withdrawing group is there. And Okay. it will do resonance. Got it? You have noted all these questions? Tell me yes or no. Noted? Noted, noted. Basicity questions, you have plenty of now with you. Yes, we will proceed further. You have noted everything. I am going further. Basicity is over. More questions you can do for homework. Now we are coming to the important other reactions of the amines. The important reactions, you know the alkylation of amines, student. This alkylation of amines we have already discussed with you. That amines. सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है. ब्रेक कर रही है? आवाज ब्रेक कर रही है?
अभी देखते हैं, अभी नेटवर्क चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। अभी तो आदेश किया था, अभी आवाज आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। हो गया। नाउ यू कैन लिसन टू मी। आवाज आ रही है? बोलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपसे। अच्छा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो कि एल्काइलेशन ऑफ एमीन्स हमने डिस्कस की थी आपके साथ। क्या डिस्कस किया था? एल्काइलेशन ऑफ एमीन्स। तो जब एमीन्स को हमने रिएक्ट किया था एल्काइल हैलाइड्स के साथ, अगर मैं इसको R डैश लिख दूं एल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो फिर आपको पता है कि क्या हो रहा था कि ये जो अगर मेरे पास कंपाउंड्स इस तरह से हैं CH3 CH2X, तो क्या होता था? ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा था? ये नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा था, ये बाहर, ये बाहर। तो आपको क्या मिल रहा था? अगर R डैश NH2 आया तो यहाँ पर क्या आया? ये X माइनस बाहर गया और यहाँ पे लगा था CH2 CH3, और फिर हमने आपको ऐसे दिखा दिया, H भी गया और X भी गया। इस तरह से ये एल्काइलेशन हो रही थी। तो हमने एल्काइलेशन का पूरा आपको दिखाया था, एल्काइलेशन ऑफ अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से फिर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन गया, बनाया था हमने। तो वो रिएक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एल्काइलेशन ऑफ एमीन्स। ये सब कौन से हैं? ये सब एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक। ये कौन सी रिएक्शंस हैं जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी के लिए तुमने बेसिसिटी के सारे क्वेश्चन मुझे आंसर किए। अभी कितने सारे क्वेश्चन किए तुमने? बहुत सारे किए आज। और 2 क्वेश्चन मैंने बार बार कहे, आपके पेपर में भी आया हुआ था वो क्वेश्चन जो हमने किया। भाई गैस फेज है या एक्वस फेज है, ये देख लेना पेपर में। वो जो मिथाइल अमीन्स बताए थे और इथाइल अमीन्स बताए थे, दोनों में से एक क्वेश्चन वो पेपर बोर्ड में भी आता। तो उसके लिए, उसके बाद मैंने एल्काइलेशन के बाद अब मैं बता रहा हूं एसाइलेशन। तो एसाइलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना पिछले लेक्चर्स में। एसाइलेशन क्या होती है कि आपके पास स्टूडेंट ये एमीन है ये एमीन। अगर आपने एसाइलेशन ग्रुप कौन सा है? एसाइलेशन जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एसाइल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। C6H5CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजोइल ग्रुप। बेंजाइल। OYL लगाना है, बेंजोइलेशन, इसे क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन। अगर मेरे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, या मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि एसिड क्लोराइड है या एसिड एनहाइड्राइड, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? O और C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या बन गया? ये था क्या? ये क्या था? एसिड क्लोराइड जो मैंने बताया। और ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। बोलो मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है? गलती करूं तो बता देना, तुम बहुत शार्प हो, बता देते हो मेरे को। ये एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देख रहे हो ऑक्सीजन लगी हुई है CO के बीच में। और एस्टर्स भी होते हैं। एस्टर्स कौन से कंपाउंड बताए तुमने मेरे को? C डबल बॉन्ड OR वाले, ये R ग्रुप लग गया, ये एस्टर है। बोलो सही लिखे मैंने गलत लिखे? जल्दी बताओ, सही है सारे? तो ये वाला ग्रुप, यहां पर ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? एसाइल। ये वाला ग्रुप कौन सा है? एसाइल। इनमें है ना एसाइल ग्रुप सब में? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो ये वाले ग्रुप लगने वाले हैं कहां पर? जो मैं अमीन्स बता रहा हूं,
आपने कहा कि ये अमीन है, देखो एग्जाम में सबसे आसान तरीका क्या है, ये अमीन है, ठीक है। आपने कहा ये लो जी मैंने इसमें CH3COCl डाल दिया, उसने पेपर में ऐसे लिखा, तो ये क्या हो रही है, एसाइलेशन, एसाइलेशन हो रही है। तो सबसे आसान तरीका प्रोडक्ट बनाने का क्या है, मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि देखो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूं CO और CH3Cl, ठीक है। मैं एसाइलेशन करूंगा ना, मैं इसको डालूंगा यहाँ से, ये बाहर निकल गया, इसको इसके साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा फिर, RNHCOCH3, तो ये क्या बन गया, एसाइलेशन हो गई, एसाइलेशन हो गई। तो यहां पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप लगाया है, नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप लगा, तो ये आपका एमआईडी था, CH3CONH2 ग्रुप क्या था, एमआईडी तो था ना, अरे ये वाला ग्रुप एमआईडी है ना, दिख रहा है। हाँ जी सर। अब H, एक H की जगह R लगा हुआ है, तो एन इथाइल, दो वाला, दो कार्बन वाला है, तो फिर एथेनामाइड हो गया, एन इथाइल एथेनामाइड हो गया। तो अब ये रिएक्शन हम कर रहे हैं कि इसे बोलते हैं एसाइलेशन, इसे क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। तो प्रोडक्ट क्या बना, मैंने अगर आपको एग्जाम में दिया CH3NH2 प्लस CH3 स्टूडेंट्स COCl, ठीक है, और ये बेस थोड़ा सा डालना पड़ता है तब ये रिएक्शन होती है, उसका रीजन भी बता देंगे, वो हाइड्रोजन ने बाहर निकलना है। तो इसमें क्या बना फिर, CH3NHCOCH3, तो एसाइलेशन हो गई, इसे क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। और इसकी जगह मैं एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दूं तब भी एसाइलेशन, और एस्टर ले लूं तब भी एसाइलेशन। तो ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं ये एसाइलेशन है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस हैं ये, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। भाई नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो बेस का काम करता है, दूसरा क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी है। और जब आपने देखा था कि अल्काइल हैलाइड में भी वो उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी, यहां पर मैंने अल्काइल हैलाइड की जगह स्टूडेंट एसाइल क्लोराइड ये ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड्स ले लिए या एस्टर्स ले लिए, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपको ये कंपाउंड्स मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें जिस रिएक्शन का नाम है, इसी रिएक्शन को एसाइलेशन कहा जाता है। आप समझ में आ गई कि H निकला और एसाइल ग्रुप आ गया, तो क्या बनी, एसाइलेशन। H निकला तो एल्काइल ग्रुप आ गया, उसे क्या बोला, एल्काइलेशन। समझ में आया, जल्दी बताओ, बोलो, पता लग गया एल्काइलेशन और एसाइलेशन में डिफरेंस। हाँ जी, हाँ जी। आप देखो कि हाँ जी इसका मैकेनिज्म क्या दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है। देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास कार्बन ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन का कहां पर आएगा, इस कार्बन पर। देखो अगर आपके पास स्टूडेंट ये कंपाउंड है, मैं इसको और भी आसान कर दूं, ऐसे लिखता हूं, यहां पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपके पास है CH3, और यहाँ पे है CO और Cl। ये आपका, ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, तो ये कार्बन कौन सा है, पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये Cl बाहर जाने वाली है, ये Cl बाहर जाने वाली है। तो अगर ये आ गया स्टूडेंट, तो क्या बन गया, C2H5N बना, ये H है, इसने बॉन्ड बनाया है, कार्बन के साथ स्टूडेंट, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है ऐसे। तो जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, नेगेटिव हो गया। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो वो अपना, अब बेस, उसमें बेस प्रेजेंट है, हमने कहा बेस प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है, तो क्या करेगा OH माइनस, अगर OH माइनस इधर से आएगा तो वो ये प्रोटॉन को अपनी तरफ से खींच लेगा, और ये अपने लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन से अपने पूरे करेगा, और अगर इसने अपने पूरे किए तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये Cl बाहर चले जाएगी, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, C2H5
NH डबल बॉन्ड O CH3 बन गया ये। तो इसका नाम अगर मैं लिखूं तो N पर इथाइल लगा हुआ है, N पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये कौन सा एमाइड है? एथनामाइड। N इथाइल एथनामाइड बन गया। आपको रिएक्शन समझ में आ गई स्टूडेंट्स? बोलो, मैं कौन सी रिएक्शन कर रहा हूं? एसाइलेशन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी बताओ, कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो बता दो स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ऐसे ये रिएक्शन भी कर सकता हूं, C6H5NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब एनहाइड्राइड के साथ मैंने रिएक्ट कर दिया और बेस में डालता हूं हमेशा। इसका प्रोडक्ट लिखना है, इसका प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट। अब एग्जाम में उसने ऐसे लिख दिया, तो इसका ये एसाइलेशन हो रही है, एसाइलेशन हो रही है। आपको पता ही है ये नाइट्रोजन किसके साथ, यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड करने वाली है। तो आपको पता है, फिर मैंने आपको बता दिया आसान तरीका, C2H5NH लिखोगे, एक हाइड्रोजन गई, और इसके बाद क्या आया? COCH3 लिखोगे। अब इस केस में जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है? वो यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला लिविंग ग्रुप है सारा का सारा। तो H प्लस इसको मिल जाएगा यहाँ से, तो ये CH3COOH भी बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है, अगर मैंने एनहाइड्राइड का यूज किया स्टूडेंट्स तो ये बनने वाला। इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट। जब एसाइलेशन कर रहा हूं तो मैं ये भी यूज कर सकता हूं, और अगर मैंने ये यूज किया स्टूडेंट C2H5NH2 को मैंने एस्टर के साथ रिएक्ट कर दिया, C डबल बॉन्ड O C2H5 और बेस डालूंगा तो ये एसाइलेशन हो जाएगी। यहां पर भी एसाइलेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है फिर? C2H5NH बना, COCH3 बना, और फिर अल्कोहल भी बन गया। बोलो, ये रिएक्शन समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। जी सर। तो ये सारी जो भी रिएक्शन मैंने बताई है आपको, ये सारी रिएक्शन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये सब जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शंस हैं? एसाइलेशन। तो मैकेनिज्म भी बता दिया और ये भी बता दिया। इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलूंगा। जब आप कह दोगे यस तो मैं आगे चले जाऊंगा। स्टूडेंट आप देख लो, आपने कर लिया, आपने नोट कर लिया, तो हम आगे चलेंगे। यस सर, कर लिया। ओके, वेरी गुड। आगे जो रिएक्शन आ गई स्टूडेंट्स, देखो एसाइलेशन का एक क्वेश्चन पेपर में आया था। अब इसने क्या दिया था क्वेश्चन? CH3NH2 प्लस C6H5COCl। आपको मिलेगा 1 मिनट, इसका प्रोडक्ट लिखना है। उसने बेस बताया, इसकी रिएक्शन बतानी है, इसका प्रोडक्ट लिखना है। स्टूडेंट आपको 1 मिनट का समय है, एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन आ चुकी है। इसका प्रोडक्ट बताओ, इसके क्या करेंगे? ये देखो वही वाली रिएक्शन है, यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर CH3NHCO NHCO बेंजीन रिंग। हाँ, और क्या बना? HCl। इसे क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम है बेंजाइलेशन। तो हमने क्या कर दिया? बेंजाइलेशन कर दिया एमीन की, बेंजाइलेशन ऑफ एमीन्स। तो जब अमीन, ये नाइट्रोजन जो देख रहे हो आपको, आपने देखी है, तो एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स जो होंगी वो रिएक्शन करेंगी। कौन कौन देंगे? एरोमेटिक या एलिफेटिक, मतलब बेंजीन रिंग वाले या दूसरे वाले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स। और टर्शरी अमीन्स सर की ये क्या रिएक्शंस बोला नहीं आपने, रिपीट करना। हैं? सर प्राइमरी ये और क्या सेकेंडरी। लिखा है, एक बार रिपीट कर। मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन जो मैंने बताई, एसाइलेशन या बेंजाइलेशन, स्टूडेंट्स एरोमेटिक, एलिफेटिक, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स देंगे, विल गिव एरोमेटिक, एलिफेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन विल शो एसाइलेशन
और बेंजोइलेशन। टर्शरी जो होंगे वो नहीं करेंगे ये रिएक्शन। वाई? क्योंकि टर्शरी मीन्स के बाद तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो फिर वो फिर क्या होगी, रिएक्शन कैसे होगी? देखो अगर मैंने प्राइमरी एमिन्स लिखा था तो इसके पास ये हाइड्रोजन थी ना प्राइमरी वाले के पास, और सेकेंडरी भी मैंने लिखा तो उसके पास क्या है, R1 अगर R2 कर दूं तो उसके पास भी ये हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन दिख रही है, यहाँ पे दो दिख रही है, तभी तो ये रिएक्शन होगी। ये हटेगा तो वो ग्रुप आएगा। जब हाइड्रोजन ही नहीं होगी, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं कोई भी, R1 R2 R3 है, इसके पास तो कुछ हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो इसकी रिएक्शन नहीं हो सकती, इसकी असाइलेशन और बेंजाइलेशन नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। किसकी होगी, प्राइमरी की या सेकेंडरी की? बोलो, बात पता समझ आ गई? अब एक और रिएक्शन बता रहा हूँ, कार्बाइलामिन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाएगी। इसे टेस्ट भी कहते हैं फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। इसे क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स, अगर तुम्हारे को मैंने कहा कि भाई दो एमीन्स दे दी, एक प्राइमरी वाली और एक सेकेंडरी वाली या टर्शरी वाली, तो अब मैंने कहा इनको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिस्टिंग्विश करना स्टूडेंट। किनको डिस्टिंग्विश करना, कि आपको मैंने कहा कि ये दिया CH3 CH2 NH2 एंड CH3 ट्वाइस NH,